gone up? Who has raised the hand? So children, let's start with the class. Okay, I'm sharing my screen. So last time, can someone in 1 minute, exactly 1 minute, narrate over here what all have you learned in the last 4 weeks that we have been meeting on every Sunday? What have we learned? Can someone tell me? Any child? देखो बच्चों, मैं तुमको बोलना सिखाने वाला हूं, और जब तुम बोलना सीखोगे तो बोलने के लिए आपको शब्दों की कड़ी बनानी होती है, शब्दों को जोड़ना होता है, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरिंग ऑफ अ सेंटेंस। और वो जब आप बोलना चालू करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप सही मायनों में सही स्ट्रक्चर कर पा रहे हो या नहीं। सो हमने किस चीजों के बारे में पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा नाउन्स, फिर पढ़ा कौन सा, कोई बोलो जल्दी से, नाउन्स के बाद क्या पढ़ा हमने? व्हाट इज दैट वी लर्न? Pronoun. Pronouns, correct. Pronoun. Then we learned, Word. correct. And then what are we also learning along with this? What else we are learning? See, we are going to learn a huge, we are going to get lots of knowledge. Now, how many of you all go to khanacademy.org? Quickly. Now, I'm going to take you to the screen. I'm sharing my screen, children. Just let me know whether you are able to see this. Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Good. Sir. Good, 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 good. Now, let's go here. Yes, sir. KHAN, Khan Academy. This is, what is this? It is saying it's an education company. Go click on it. Right? You go over here, and how many of y'all have registered on this? Let me know. कितने बच्चों ने यहाँ पर रजिस्टर किया है? बताओ मुझे. कितने बच्चों ने रजिस्टर किया है? See, there are all these courses, children. If you click on this on the left hand side top, you'll see the courses. So if a child is from class 1, he or she can click on class 1. If a child is from class 9, he or she can click on class 9. Now, moving forward, if you browse down, you see there is a maths foundation. Now, this is something very interesting, children. You have to go and get your mathematics very, 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 very strong. And that you can do by clicking on these classes. We are going to go one by one. Don't worry. Then let me also tell you when you are going to study this, because this is all free. This comes free of a cost. If you want to donate, if somebody wants to donate, you can donate. Now, if somebody here are teachers, or somebody here in this class is a mentor or is mentoring children, they have something for the mentors as well. They have something for the teachers as well. Now, if you see here, over here, this is science essentials, physics, chemistry, biology, and then you have state boards, Punjab, Uttar Pradesh, Maharashtra, Assam, and NCERT. Now, what you have to do is, children, whichever class you come from, you have to just go click on that class and go forward. Now, let's go for maths. If you click on class 11, I'm just taking for instance, and here you will come that, okay, what all is covered in class 1. So they are a class 11. So the unit 1 is sets, right? You click on sets, it will take you there. And these are all video driven, children. So these are all video driven, and you have to practice all this with these videos. So suppose there are trigonometric functions and you go here, right, and start. So it will tell you like, okay, what is intro to radians? What is radians and degrees? So somebody who is from science and maths, they will get to know all this.
If you go to linear inequalities, you go here. Now let me click on one of the videos. See, now it is buffering and you will get this video up. Okay? So now this is the test solution. You click on this and you get this video. Please, are you able to hear this fellow? Yes, sir. उसका आवाज आ रहा है वो जो बंदा बात कर रहा है? No, sir. No, sir. No, sir. हाँ? No, sir. No, sir. Okay, ठीक है, कोई बात नहीं. सुनो. I know why, because I will stop share and I will again share it as Sir, your video has paused. wait a minute. Out zero अभी आ रहा on है? this inequality right Are you over able to here. see? Yes, sir. Yes, sir. Are you able to hear him? X with उसकी आवाज आ zero. रही है? Yes, sir. We'll have Lovely. 0 plus 2 So needs to be see, less children, than or he equal to himself 2 is Mr. times Khan, 0. right? Is that Salman true? Khan. इस Well, बंदे on का the नाम left-hand है side, सलमान this खान. is 2 needs to be ये less than बंदा or equal कहाँ पे to पढ़ा 0. है? Is that In true? Is 2 less than or world's equal to 0? No, 2 is second larger rank than 0. university, So this is not going to be true. So MIT, this does not Massachusetts satisfy. Institute This of does not Technology, satisfy MIT. the left-hand side ये inequality. बंदा Let's see वहाँ if it पढ़ा है. satisfies the right-hand और इस side बंदे को inequality, or मैं this इसकी कहानी inequality right इसलिए over बता रहा here. हूँ, तुम्हें So समझना चाहिए कि ये in order to कितना satisfy उसने 3 कष्ट से बनाया है times और ये सारा 0 फ्री दिया plus है. 4 needs और to be अगर greater आप than इस चीज पे 5 नहीं times जाते 0. हो, अगर ये नहीं Well, 3 पढ़ते times हो, 0 is just तो मैं 0. बता रहा 5 हूँ times 0 is 0. हम So 4 needs to be अपने greater आप than को 0, which is मूर्ख true. समझना So it चाहिए. इसलिए क्योंकि does ये इतना बड़ा satisfy खान the है, this इतनी inequality बड़ी right over here. जो So हमारे 0 सामने खान ने does खान satisfy रखी है, this और inequality. वो अगर हम Let's try it नहीं 1. समझ पा रहे हैं, तो Let's मैं try it चाहूंगा 1. So to आप satisfy सारे this one, बच्चे 1 ये वाले खान plus 2 एकेडमी needs to डॉट be ओ आर less जी than or पे, और equal to जिनके 2. माता पिता यहाँ So 1 ज्वाइन plus किए 2 is हो, 3. Is मैं 3 रिक्वेस्ट less than or करूंगा equal to 2? प्लीज यहाँ No, जाके 3 is आप larger than बच्चों 2. को लॉगिन So पे this जाके, यू गो टू द लॉगिन, और यहाँ पे लॉगिन करके प्लीज अपने आप को रजिस्टर कराए सारे बच्चों को, जितने भी है हमारे यहाँ पे. Just go create your accounts. Children, just see that, okay? You go here and you create your account. Email address, password, and then you go. So create an account, you click on this and your account will get created, right? So they will first ask you whether you're a learner, are you a teacher, or are you a parent? What's your date of birth? And enter the class code and everything, and then you start getting registered yourself, right? So I understand that, okay, there are few things here on in maths. Let me tell you something in maths also. No, sorry, English. Please don't make noise, children. See, how many of you all know that, okay, there is a SAT exam? I'm just giving you first, then we will move to the class. कैट पता है, सेट नहीं पता. सैट पता है? ये देखो, सैट की सारी आपको सारा यहाँ पे फ्री में मिल रहा है. सारी पैसेजेस वगैरह आपको जो चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पे फ्री है. सो आप सैट का जो भी है राइटिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, उसकी सारी स्टडी यहाँ से कर सकते हो. मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बच्चों, इसे भूलना मत. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स पूल इन द वर्ल्ड. It's one of the best. So please go here and study. Okay, now let's move to our class, regular class. You're able to see this? Yes, sir. Good. Now we have learned verbs, right? We have learned so many other types of verbs. How many types of verbs were there we were talking about? Can children tell me quickly? आप बहुत स्लो हो यार.
फटाफट फटाफट बोलना चाहिए. 7. Yeah, how, which are those? Can you tell me? Quickly. Regular. Sir, regular. Correct. And, बोलो. regular. बोलो रेगुलर बराबर है, फिर बाद में रेगुलर के बाद उसके बाद क्या Linking. आएगा? इरेगुलर. Linking. Regular, irregular, then Linking. correct, then Transitive. right. Third, देखो Intransitive. रेगुलर का उल्टा इरेगुलर, ट्रांजिटिव का Transitive उल्टा का intransitive. इंट्रांजिटिव. बाय बेटा, ऑल द बेस्ट सुनो. Intransitive, then which Finite. ones are there? Finite. Finite. Finite, then Infinite. correct. See here, regular, irregular, linking, transitive, intransitive, finite and infinite, right? This is all we learned. Now can someone tell me what is the difference between finite verb and infinite verb? Can someone tell me what did we learn about infinite and finite? Sir, finite mean that we countable. Finite मतलब क्या है? Countable है, बराबर है. Which we can count. करेक्ट. जैसे कोई भी चीज जो जिसकी एक सीमा होती है, करेक्ट. एंड इनफाइनाइट इज लाइक ओके अनलिमिटेड, समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी करेक्ट चिल्ड्रन. नाउ उसमें क्या होता है देखो, ट्रांजिटिव में और इंट्रांजिटिव में मैं सब बता रहा हूँ, ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनाइट में क्या आ रहा है देखो, बाजू में आपको कुछ उदाहरण दिया है. we spend a great amount of time together and we want to do it forever, right? We spend a great amount of time together and we want to do it forever. Why is this finite? And what is infinite? On the other page we will tell you what are finites here. Tell me. Finite verbs mean those verbs which can change their form in accordance with the subject. Now, what is the subject here? We spend a great amount of time together and we want to do it forever. Tell me quickly. What is the subject over here, children? We spend a great amount of time. What is the subject? Sir, we. Correct. We. Perfect. What is spend, by the way? And what is spend? Verb. Correct. Spending. It is spending is an action. You spend. Very good. Then अब आपको समझ में आ रहा है कि एक सेंटेंस में कैसे उसको डिकोड किया जाता है. वेरी नाइस चिल्ड्रन. व्हाट हैपेंड? ओ हाँ, क्विकली. सो यहाँ क्या लिखा है? Finite verbs mean that verbs which can change their form in accordance with the subject. Don't just sit. अभी यहाँ पे we spend a great amount of time together and we want to do it forever. So this is we. Now if I change it, I spend a great amount of time studying for physics and I want to do it forever. So what happens? I am going to change this, right? That I is in accordance with the subject. So whatever the subject is, I am going to change my verb. So this, I spend, we spend, then they are, what will come then? Verb, they are Spending. करेक्ट. दे आर स्पेंडिंग. बट जैसे ही दे आर स्पेंडिंग आएगा तो क्या हो जाएगा? स्पेंडिंग. उसको कोई सीमा है? No, sir. Yes, sir. हाँ, नहीं. नहीं सर. No, तो sir. क्या होगा? स्पेंडिंग इज लाइक ओके, इट इज गोइंग ऑन. दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम, मतलब क्या होगा उसको
आप ये बता रहे हो कि you are infinite. So finite is and infinite, they will always be. Don't just sit. Matlab don't just sit. Sit is what? Finite. You sit. Don't lie. Finite. Don't lie. Verb. Finite verb. He did not show me the chocolate. He did not show. He didn't show. He didn't show. I couldn't believe. I could not believe. So finite. All these are finite, children. He did not show, believe. These are all actions. Remember, verbs. There are types of verbs. These are all verbs which are going to be exactly in accordance to the subject, that is we. Right here, what is the subject? Don't just sit there idly. When, what is the subject here in the second sentence? दिख रहा है मेरा कर्सर? You. Yes. Don't lie when someone asks you. You. He did He. not show. Him. So he didn't He. show. Right? So here Did the not. subject is where the subject is in between. get him to Yes, do yes, so. yes, yes. Now, children, the linking verb. Linking verbs link a subject to the predicate of the sentence. Linking verbs are not action verbs. They link, express a state of being. So here is a list of linking verbs. It is not exhaustive. So this is to be seen, to become. Children, please mute. To feel, to taste, to appear, to smell, to turn, sound, to grow. This is what? What does that mean? Now, linking verb. ये क्या बोल रहा है linking verb में? Children, please mute. Linking, please mute. If you don't want to say something, please mute. Linking verbs, a subject to the predicate of the sentence. What is it linking? It is linking the subject to the predicate. Now here, Lisa is the subject. Lisa is my mother. So Lisa is a subject. The linking verb is connects to the predicate my mother. So this is. Now can someone make, or I'll give you an example, say the Saman-sung. Okay, the Saman-sung is taking a class for children. Now, what is the subject in this sentence which I just narrated? Saman. Correct. The Saman-sung, both दो भी हो सकते हैं दोनों word को एक, because Saman-sung is one. So this is the subject. Now आगे verb कौन सा है वो sentence में? Saman-sung is what? What did I say? Is taking a class for their children. So what is the verb here? Taking a class. Correct. So that Only taking is verb, but taking a class is predicate or a clause. So remember, children, when you say clause, जैसे ही आप clause बोलते हो तो it is more than one word. It is like a 4-5 word which is a sentence, you can say so. So उसे clause बोलते हैं या predicate बोलते हैं. ठीक है? Now Susan is your niece. Here Susan is the subject. The linking verb is. So it is linking. It is not an action. Remember that. क्या बोल रहा है ये verb क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि भाई ये action define नहीं कर रहा है, ये सिर्फ link कर रहा है. The flower smells, the flower smells so nice. तो flower का क्या कर रहा है? वो link कर रहा है. Smells. David seems, right? Or that girl is my classmate. So what we can do is, in all the linking verbs, you will always have to know one thing, that is this is going to be there.
to be, to seem, to become, to feel, to taste, to appear, to smell. This is all there. Okay. Today's class you will find it little boring also, because there is one thing. Let me, because it's more of a theory, because these theories have to be understood. Now transitive. What is transitive verb, children? Because after this we will now move to adverbs. What is a transitive verb? We have learned transitive. ट्रांजिटिव मतलब जो ट्रांजिट हो रहा है. जैसे I drive my car. I drive my car. He's driving his car. मतलब ट्रांजिटिव. इट इज ट्रांजिटिव. मतलब क्या हो रहा है कि कोई एक्शन कोई बंदा ले रहा है and he is taking that in a, see, is it really going smooth? I stopped my car. I stopped the car. No, sir. So what happens is need an object. Transitive verbs need an object. I bought a car. Matlab this is a car, this is object. But intransitive verbs, what happens is cannot have an object. Matlab I smiled. I am smiling. Yeah, I am walking. Yeah, I'm walking on my. I'm walking barefoot. I'm walking barefoot. I am traveling footboard on a train. Sometimes I have to travel footboard on a train. So you have to do what you know. When you are using transitive verbs, you have to have an object. When you are using intransitive verbs, you don't need to have an object. Object is like, okay, whatever. Just say I am driving my car. My car is an object. I'm eating with a spoon is an object. Spoon is an object. So transitive verbs is like, okay, it will always have an object. Remember children, they will not ask you that, okay, please explain which is transitive and which is intransitive. कोई जरूरत नहीं है. बट आपको इसलिए इसकी जानकारी चाहिए कि ट्रांजिटिव में आपको हमेशा एक ऑब्जेक्ट लगेगा और इंट्रांजिटिव में आपको ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा. ठीक है, इतना ही याद रखना. बिकॉज नाउ वी विल सॉल्व couple of questions here. Now come on the right side. If you see, right, now Yes, verb sir. change, transitive. Marriage hasn't changed her, right? Marriage hasn't changed her. The area has changed greatly in the last decade. What is this? Marriage hasn't changed her. So transitive में क्या बता रहा है ये बताओ इधर. Marriage. So what is the object here? ट्रांजिटिव में यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बताओ बच्चों. इधर जैसे कार ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं बोल रहा है Changed. नहीं, Marriage. Change. Marriage. Marriage is that, because marriage is something that has happened. Marriage hasn't changed her. Close your eyes. I have got a surprise for you. Close your eyes. I've got a surprise for you. What is this? What is the object here? Open. Huh? Need an object. देखिए ट्रांजिटिव में हमें एक ऑब्जेक्ट लगेगा. What is the object here? Close your eyes. I have got a surprise for you. Sir, eyes. All right. Open the window. It's too hot in here. Right. Window. Have you done your coursework? Do ka. Open. Open is verb, huh? Remember. But the object here is window. Closing is an action, but object is eyes. So something like this here. Set is a verb, but what is here? Kate set a chair. Kate set a chair. So chair is what? An object next to the bed. Run. Run is an verb which is action. So Mikhail used to run a
restaurant. Mishail. Mishail is the name of the person. Used to run is an action. And what is the object? Restaurant. Live. Our cat lived till he was 10. So live. Our cat. So what is this? Cat is subject, right? Live. Lived is your object. That action, sorry, verb. Till he was what? 10. So now 10. what is this object here? Cat. Our cat. Cat is the object. Write your name here. Writing what? Your name here. Remember children, ये बहुत ज्यादा आपको ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव है या ना, इसमें कोई जाना जरूरत नहीं है. बट while making your sentences you have to know that okay, I stopped the car stopped. ये जो चीजें होती है आपको अंडरलाइन सेंटेंसेस में आपको पूछे जाएंगे. जैसे अभी मैं कुछ उदाहरण के तौर पे हम एक टेस्ट सॉल्व करेंगे. ठीक है, वी विल सॉल्व अ टेस्ट and let's get to know whether you are able to solve that. Now the last one, in the intransitive, the areas changed greatly in the last decade. Intransitive, the areas change, ये change है यहाँ पे. ठीक है, change. So the areas changing is what? Changing is the verb. The areas change greatly in the last decade. तो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट आ रहा है? No, sir. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं. No, sir. No, sir. सिर्फ एक एरिया के बारे में ये बता रहा है, कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है. मोस्ट शॉप्स हियर क्लोज एट 5:30 PM. Close verb. No, sir. क्लोज इज दिस. सो यहाँ पे भाई, हाँ, यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है जो 5:30 बजे बंद होती है. द म्यूजियम ओपन्स एट 10 AM. सो ये सिर्फ म्यूजियम के बारे में बोल रहा है कि भाई हाँ ये 10 बजे खुलता है. Joe's doing well in this. So always remember, dear children, when you are using intransitive, anywhere you will see there is no object. It is only defining the action which they are saying that Joe's doing well in his new job. मतलब वो एक्शन को डिफाइन कर रहा है. जैसे भाई हाँ, जो कैसे कर रहा है? जो अच्छा कर रहा है. He's doing well. He's just in his new job. The sun was setting. So matlab the sun was setting and a red glow filled the sky. The sun was setting and a red glow filled the sky. You got set, setting here. Do ka done, doing. Open, opens. Close, close. Change, changed. So when you are using this, remember, in largely intransitive, it is ing form. The sun was setting, largely, or s form. Here in this transitive, you will never have ing form. You will never have writings, doing, living in the transitive. That's the only thing which you have to know, children. Right? Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. Yeah. Now, what is the function of a linking verb? Why it is showing this? Excuse me, sir. Yeah, bolo. What is the function of a bolo? Sir, can you please show the slide again? That side. The previous slide. Yes, sir. You can take a clip of it. I have question. This sentence says that the sun was setting and a red glow filled this sky. Why the filled is not verb? Why the filled? Yes, sir. Now let me tell you here, they are talking about the set. They have taken the set as a verb. Fill is also a verb in a context which is not in this sentence. It is in this sentence they are talking about the sun as a subject. Subject क्या है? Sun है.
सन के एक्शन क्या है, सेट हो रहा है, बराबर। एंड वो सेट हो रहा है तो कैसे होता है, जैसे आप अगर शाम के वक्त जब सन ऐसे नीचे नीचे जाता है तो पूरा आपको स्काई कैसे दिखता है, येलोइश रेडिश। तो वो क्या बोल रहा है, द सन। सो ये सन को डिफाइन कर रहा है, उसकी एक्शन। सन क्या कर रहा है, सन सेट हो रहा है and Yes, sir. a red glow filled the sky. See, ये setting, ये fill is also actually, if you see, filling, I filled, it's an action. Fill is an action. You are very correct, children. You are perfect. That is an action. But here it is not an action to define the sun. It is defining what the sun. Sky. सन का एक्शन को क्या डिफाइन कर रहा है, सन सेट हो रहा है। Setting. बट ये सेट होते समय क्या हुआ है, पूरा स्काई फिल हुआ है रेड ग्लो। सो एक्चुअली you can say that okay, yes, it is a verb, but then it is not defining the sun. sun की कोई एक्शन को डिफाइन नहीं कर रहा है। Yes, You're getting sir. it? It is हाँ, not yes. defining the noun. It is not defining the noun. It is defining the verb. वर्ब को डिफाइन कर रहा है कि भाई ये सेट होते समय, और यही हम चीज देखेंगे when you will learn adverbs, because adverbs define what, children? Adverbs define the, adverbs किस चीज को डिफाइन करता है, Sir, noun. हाँ, adverbs, adverbs, add verb, verb, Sir, add verb. verb, Verb. वर्ब को Sir, डिफाइन verb. करता है। और एडजेक्टिव्स, Noun. एडजेक्टिव्स नाउन को डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने अगर किसी का नाम लिया भारत या जेमिनी, तो जेमिनी कैसे है, शी इज अ वेरी स्वीट चाइल्ड, स्वीट इज एन एडजेक्टिव, वेरी नाइस चाइल्ड, एडजेक्टिव, वेरी notorious child, adjective, notorious, very tall child, defining that. So it is defining, that is all adjectives. Whatever you, Quantity whoever and you want to quality. define, define the noun that is defining, that noun definition is called adjectives. And when you define it to the verbs, it is adverbs. Remember, this filling here, child, is defining the setting. It is not defining sun. That is why in this sentence, filling is not the verb, setting is the verb. Is this clear? Yes, sir. Yes, But sir. fill, but if you say fill as a word, yes, it is an action, so it is a verb. But in this sentence, it is not. Sir, it is defining the work of the subject. Or verb of the Subject. verb of the subject. Correct. You're right. Very nice, child. What is the function of a linking verb? Linking verbs serve two purposes. While they explain state of being, that state of being can be two things. Linking verbs serve to help rename or re-identify the subject. When linking verbs help to rename or re-identify the subject, when they are used with a predicate nominative. A predicate nominative is a noun or a nouns that follow a linking verb that renames a subject. They are my friends, right? They are my friends. He is a baseball player. ये क्या बोल रहा है? Linking serves two purposes. कौन सा? एक होता है the state of being. State of being is what? Yeah, he is an engineer. He is a doctor. It's a state. वो कौन से state में है, मतलब क्या है? Yeah. So explains the state of being. That the state of being can be two things. So this is state of being. He is a baseball player. He is an engineer. He is a class 4th mathematics teacher. Are you getting? This is the state of being. And here linking verbs serve to help describe the subject as well. Now
when linking verbs help to describe the subject when they are used with a predicate. Now, Sara seems, we are. So it is in each of these examples, the words after the linking verb are adjectives and are एक मिनट and they describe the subject. In each of these examples, the words after the linking verb are adjectives and they describe the subject. Now we will be slowly moving into adjectives, children. Now, a predicate adjective is an adjective or adjectives that follows a linking verb. Linking verb को किससे follow करते हैं बच्चों? Adjective से. हमेशा याद रखना ये, क्योंकि ये आपको सेंटेंस करेक्शन में आएगा. They will ask you that, right? वो we are working on a project, which seems very tough to execute. So in this example, the adjectives here, we are working. Working is what? Verb. On a project which is very tough to execute. So हम किसी project पे काम कर रहे हैं, वो बहुत tough है execute करने के लिए. So what is the adjective here? Tough. What is the adjective? We are working. We is a noun. Are working. Working is a verb, right? On a project, right? Again, project here is, what is a project? Adjective. It is what? It is an object, matlab it is something as an object. So that is, so object को मतलब ये noun form में है. So how is this object? Project कैसे है? Project which is tough to execute. So tough is, so what is tough is defining what, children? Tough is defining the project. How is the project? The project is tough. To do what? To execute it. Correct. So always remember, when you read the sentence, see to it that when you read the sentence, each word किसको refer कर रहा है. ठीक है? ये हमने किया है. अब हम थोड़े से tough चीजें solve करते हैं. ठीक है? What is this? अब हम we will solve some real tough problems. I want you to solve this. Did we learn this? Annie and her brothers. We have done this. We have done this. Right, correct. Now, children, let's go to adverbs, right? And इसके बाद हम क्या करते हैं, या अभी आपको you want to solve a exercise? What do you want to do? Sir, solve exercise. चलो ठीक है, चलो. How many of you all have taken this book which I told you? Word power यहाँ दिख रही है? Word power made easy by Norman Lewis. मैं वो भी खोल रहा हूँ. Word power made easy by Norman Lewis. This is one of the best books for your vocabulary. The most effective vocabulary builder in English language. अगर आपको आपकी English बहुत अच्छी करनी हो बच्चे, this is the book. I tell you, you take this book. It is available free of cost. You can download it. Just download Word Power Made Easy, Norman Lewis. Please do that whenever time permits. Now let's go to some exercises. Yeah, we will go on exercises on this.
चलो can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pick out all the adjectives in the following sentences and say to which class each of them belongs. The ship sustained heavy damage. Now, the ship is what, children here? Subject. Third Correct. subject. Subject. Now, what is sustained, what is heavy, and what is damage? Heavy that. Pick the adjectives. हमें adjective Heavy pick करना है. adjective. Adjective किसको define करता है? चलो. Quality and quantity. हाँ? Quality and quantity. ना बच्चे adjectives किसको define कर रहा है? Noun. बराबर, perfect. तो अभी यहाँ क्या हुआ है? क्या डैमेज हुई है? शेप. क्या हुई है शेप? डैमेज हुई है. तो ये डैमेज कैसी हुई है शेप? Heavy damage. बराबर. सो एडजेक्टिव क्या आएगा यहाँ? Heavy damage. हेवी डैमेज. डैमेज हुआ है. कैसे हुआ है? आई कैन से द शिप Heavy. सस्टेन. Heavy. अभी देखो मैं हेवी निकाल रहा हूँ. मैं यहाँ से हेवी निकाल रहा हूँ. निकाल दे रहे हैं, हम निकाल रहे हैं. अभी ये सेंटेंस क्या हो गया? द शिप सस्टेन. हेवी निकाल दो. द शिप सस्टेन डैमेज. Damage. बट कैसे डैमेज हुआ है? Don't know. We don't know. हेवी डैमेज हुआ है. सो इट इज डिफाइनिंग दैट डैमेज. डैमेज को कैसे डिफाइन कर रहा है वो? By heavy. It is by heavy. Now, a live ass is better than a dead lion. What is this? Tell me, children. What does this mean, by the way? What is that you are? What does this mean? A live ass is better than a dead lion. मतलब एक लिविंग गधा वो बेटर होता है डेड लायन से. हाँ, अब इसमें बताओ मुझे एडजेक्टिव कौन सा है? व्हाट इज द एडजेक्टिव हियर? Dead lion. Dead. हाँ, Dead. एडजेक्टिव किसको डिफाइन कर रहा है? Dead. Dead lion. डेड को डिफाइन कर रहा है. क्या बोल रहे हो? Better. So better. Yes. I had not seen him for several days. What is this? बोलो. देखो ये सॉल्व करते समय आपको यू हैव टू सॉल्व चिल्ड्रन, जिसे कहते हैं ना, यू हैव टू बी रियली सॉल्विंग इट विथ योर all the principles that we have been learning, because if you don't apply these principles you will not be able to solve these problems. Actually आज क्या हुआ है, I have also traveled yesterday from Delhi, so I have also really मैं रात को 2-2:30 बजे पहुंचा हूँ. so I have really not जिसे कहते हैं ना, पूरा जो एक सीक्वेंस होती है हमारी जो स्टडी की कि आज ये 4 स्लाइड्स पढ़ने हैं. मैं सुबह जब कटके सर हमारे यहाँ आए तो हम बहुत थके हुए थे. तो आई रियली वाज वेरी टायर्ड. तो आई जस्ट वांटेड टू काइंड ऑफ टेक योर क्लास बिकॉज आई एम नॉट टुडे, जिसे कहते हैं ना, एक फ्लो में जो रहते हैं, क्योंकि हमने खुद ने ही अपना जो एक पूरा क्या क्या कवर करना है ये हमारा रह गया था आज आपके लिए. अगर हमने वो किया होता तो आज थोड़ा क्लास और स्मूथ चला जाता, बट आज हम वो नहीं कर पाए हैं, करके आज थोड़ा सा शफलिंग हो रहा है. बट समटाइम्स यू हैव टू गिव दैट एलिमेंट ऑफ डाउट आल्सो बिकॉज वी आर टू टाइड अप ऑन लॉट मेनी थिंग्स. What I will do is, children, I will today stop here.
I will not bother you. I want Katke sir and Atyendar sir to take it forward. Atyendar sir and Katke sir, थोड़ा सा आप ले लो आज. थोड़ा मुझे अभी I will Katke sir and Atyendar sir. सर राजेश कांबळे सर. हाँ, मैं थोड़ा सा राजेश सर मैं कुर्ला के प्रोग्राम में हूँ. यहाँ पर सीडर कैंप चल रहा है. हाँ तो अत्यंतर अत्यंत सर सर को बोलिए, परियार सर होंगे. परियार सर परियार जी सर सर है जी. या मैं प्रोग्राम इधर में हूँ दूसरे सर, भी प्लीज. हमारे जो उपाटक है दूसरे कोई है? एक मिनट. आज थोड़ा सा क्या है उसके लिए हमें भी थोड़ा हमको भी बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है. सर मैं 5 मिनट में वैसे ज्वाइन हूँ, जस्ट नाश्ता कर रहा हूँ. दूसरे कोई है क्या? पठान दूसरे सर. कोई है यहाँ पे? आज कोई है हमारे जो मेन लाइन कार्यकर्ता में से कोई है? एक मिनट अतेंद्र सर आज जुड़े हैं. अतेंद्र एक मिनट एक मिनट. नहीं क्या हो गया है आज थोड़ा सा ना, मैं अपना जो हमें होमवर्क करना पड़ता है ना, ये पूरे जैसे ये 4 स्लाइड, क्योंकि मैं रात को 2:30 बजे पहुंचा हूँ दिल्ली से. कोई और है क्या? कोई दूसरे है हमारे आठवले अमरावती से? कैन समवन से समथिंग? अंशदीप जुड़े हैं. अंशदीप जुड़े हैं सर. दूसरे कोई है क्या हमारे यहाँ से? कोई हमेशा जो जुड़ते हैं? अभिषेक राज है या कोई और है? Good morning. Kirti here. हाँ कीर्ति, व्हाट यू कैन डू. हेलो. हाँ राजेश जी. हाँ जरा आप ले लो ना थोड़ा आज, क्योंकि मैं आज बहुत टायर्ड हूँ. सो कैन अच्छा, यू हाँ. जस्ट टेक इट, बिकॉज क्या हुआ है आज मैं बिल्कुल ही, मैं खुद भी प्रिपेयर नहीं था. मैं सुबह उठा ही 9 बजे, 9, सवा 9, 9:30 बजे. तो हाँ मैं आई जस्ट हर्ड दैट. एक्चुअली मैं पूछ रही थी कि अगर मैथ्स का कुछ ले लूं मैं बच्चों के हाँ लिए. मैथ्स क्लियर ले लो. ओके, मैं पूछना चाहती थी कौन अबैकस सी एज के बच्चे हैं यहाँ पे. सारे मिक्स है, सारे मिक्स है. अच्छा. गुड, यू टेक दैट. हाँ सो यू हैव अ 50 चिल्ड्रन हियर एंड आप इसका ले लो, तुरंत ले लो. चलो अच्छा, मुझे थोड़ा सा 5-10 मिनट दे दीजिए, लैपटॉप सेटअप करती हूँ मैं अपना हाँ बस. प्लीज 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 तुरंत. हाँ, चिल्ड्रन थैंक यू जस्ट थैंक बी यू. देयर. चलो कुछ जस्ट ये करते हैं. अत्यंतर 5 सर. मिनट. एक हाँ एक हाँ मिनट हाँ में कीर्ति एक आप मिनट करो. में आता हूँ सर. जस्ट पार्डन मी टुडे चिल्ड्रन, क्योंकि हमें भी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है बच्चों. इट कैनॉट बी अ ब्लैंक दिस थिंग. एंड आज टुडे since I woke up late and I got ready by 10:30, I didn't have, and there was a call, so I couldn't really prepare what could be the sequence of teaching today, the class. Right, sir. We take rest. I am ready now. कौन परियार सर आ गए? सर अभी सर. कीर्ति मैडम आ रही है. कीर्ति मैडम मैथ्स ले रही है बच्चों के लिए. 5 मिनट में बात करता हूँ. सर मैथ्स पढ़ा रही है वो, थोड़े टाइम पढ़ाने दो. कोई बात नहीं, मैं तो ऐसी बात करूंगा कोई और. हाँ अभी एक नॉर्मल बात कीजिए आप. हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? Good morning, sir. Fine, sir. Good morning, sir. Sangamam, sir. संघं नमामि संघं नमामि. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. हाँ क्या खा रहे हैं? अभी नाश्ता चल रहा है. मैंने अभी नाश्ता किया है. ओह गुड, वेरी गुड. तो सब बच्चे कुछ बताएंगे कि आप सब कोई भी क्या बनना चाहेंगे, क्या आपकी जो है विश, जो कहते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं. व्हाट यू Sir, I become a IAS officer. ओके, one by one hand raise. बोलते जाए. Beta. हाँ बोले बेटा. Sir, I become a IPS officer. ओके नेक्स्ट. Sir, I become a doctor. गुड नेक्स्ट. Become a DM. I am a IAS officer. गुड. नेक्स्ट. Sir, I want to become a singer. ओह वेरी गुड. नेक्स्ट.
become a Next, judge. next. Hurry up. No. Quick, fast. बोलिए बोलिए. Quick. I think others do not want to be nothing. What beta? सुना नहीं बेटा. सारे वीडियो सारे वीडियो ऑन करो फटाफट. अच्छा, हमारे पास सब होंगे, आईएएस भी होंगे, आईपीएस भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर होंगे, सिंगर होंगे. Then what else? I want to become Prime Minister. Oh, very good. Then what you have to do for becoming Prime Minister? How will become Prime Minister? जो पापा कहते हैं वो नहीं बनना, अपनी अपनी मर्जी से बनना है, आपकी इच्छा से. ये नहीं है पापा तो कुछ ही कह देंगे ये करना है, ये करना है, ऐसे नहीं करना. जो आपका इंटरेस्ट है वो करना है. What do you want to become? Sir, I want to become a judge. Good, very good. अच्छा, मुझे बताओ सब, what else is left for all of us? What we should be? Besides these things, what you, doctor, IAS or IPS, anything, prime minister, chief minister, whatever. What else is left? What all of us have to be? A honest and trusted person. Any other? कोई और बताए क्या रह गया है इसके अलावा जो सबको बनना चाहिए? अगर One वो Indian. साबित Sir. जी. A good person, sir. Good. Others? A honest person. Good. Others? Samarthangi. Very good. Next. Others? Saman. A brave person. Good. Having a helping behavior. Good. परिहार सर. सबको एक मिनट सर, हम सबको एक अच्छे इंसान जो है वो बनना बहुत जरूरी है. आचरण हमारा जो सही. उसके बाद बाकी सब चीजें ठीक है. अदरवाइज हम प्राइम मिनिस्टर या डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन जाएंगे, हम जो है हमारे समाज, हमारे भाई जो ब्रदरहुड है वो नहीं ला सकते. और जो अनइक्वलिटी जो रहेगी, तो अच्छे इंसान, अच्छे आचरण, गुड कैरेक्टर, एथिकल पर्सन और साइंटिफिक टेम्परामेंट की सोच, तो ये सबको बनना चाहिए. बाकी सब ठीक है साथ. You are ready, तो प्लीज. आए सर कटके सर आप. परिहार सर. जी सर. सर मेरा अभी प्रोग्राम शुरू हो रहा है, 2 मिनट के लिए बात करूं बच्चों के साथ? जी बिल्कुल सर. आए सर. यस सर. मेरी आवाज आ रही सर? यस सर, कमिंग. बच्चों, अभी मैं एक तो बड़े प्रोग्राम में हूँ मुंबई में, पर आपसे मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ. जैसे परिहार सर ने अभी कहा कि किसी को, लोगों ने कहा कि मुझे बनना है, आईएएस बनना है या इंजीनियर बनना है, टेक्नीशियन जो भी है, सिंगर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, लेकिन उनके कहने का इसेंस था कि सबसे पहले हमारा सबसे ऊपर टारगेट होना चाहिए एक अच्छे इंसान बनना. तो बाबा साहब अम्बेडकर का भी यही विचार था. उनका एक कोटेशन है, वो कहते हैं कि ग्रेट मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एन इमिनेंट वन इन दैट वे ही इज ऑलवेज रेडी टू बी सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी. वो कहते हैं कि महान इंसान प्रसिद्ध इंसान से, सेलिब्रिटी
इंसान से अलग कैसे होता है? क्यों वो महान होता है? क्योंकि महान आपकी आवाज दोबारा करना सर आपका। क्यों बाबा मान साहब कहते हैं कि ग्रेट मैन इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम एन इमिनेंट वन, इन दैट वे ही इज ऑलवेज रेडी टू बी सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी। महान इंसान जो होता है वो प्रसिद्ध इंसान से या सेलिब्रिटी इंसान से अलग कैसे होता है? क्यों महान होता है? क्योंकि वो कहते हैं कि ही इज ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार रहता है किसके लिए? टू बी सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज की सेवा के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। जैसे कि बाबा साहब खुद कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन मैंने ना सर्विस सुनी ना कुछ सुना, मैंने लोगों का हित चुना और मैं समाज की सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार था। आप चाहे जज बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, साइंटिस्ट बनो, एक्टर बनो, सिंगर बनो, जो भी बनो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले बाबा साहब कहते हैं कि हमको समाज की सेवा करने के लिए तत्पर इंसान बनना चाहिए। जब भी कभी समाज में कोई प्रॉब्लम होता हो, किसी का प्रॉब्लम हो, किसी का कानूनन प्रॉब्लम हो, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो गया हो, किसी को गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट नहीं मिला हो, या जो पीड़ित है, वंचित है, उसके साथ सत्य है लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता हो, तो ऐसे में हमने हमेशा के लिए उसकी मदद के लिए तैयार रहना है। इसका मतलब बाबा साहब का कहना है कि हर इंसान को सबसे पहले महान इंसान बनना चाहिए, बाद में बाकी जो भी बने वो बहुत अच्छी बात है, पर इंसान बनना सबसे कठिन है। और वही बनने की जो भी इच्छा रखता है उसी को बाबा साहब कहते हैं कि वो ग्रेट मैन। ठीक है, मुझे था, मेरा एक प्रोग्राम शुरू रहा है बच्चों, सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप बने रहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सर। जुड़ते नहीं हो, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सर, परिहार सर को मैं वोट टू परिहार सर। जी सर, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम। संगम सर। नाउ कीर्ति प्लीज। संगम नमामि सर। कीर्ति बहन जी, यू आर हेयर नाउ, टेक ओवर प्लीज। यहाँ बच्चे जो है अभी कीर्ति मैडम पढ़ाएगी सर थोड़े देर में, यार सर कीर्ति मैथ्स पढ़ेगी। नहीं आ रही है। वो Good जुड़ गई है afternoon, तुम्हारे ma'am. लैपटॉप से। बुला ली। कीर्ति बहन जी, यू आर रेडी? मैं अपना लैपटॉप सेटअप कर रही हूँ, जस्ट ओके ओके वन मोर टू मोर मिनट्स। ठीक है सर। हतेंद्र सर, आप 2 मिनट बात करें बच्चों से। यस सर, यस सर। हेलो बच्चों, संगम नमामि सर। संगम नमामि सभी को, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को, सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें तो मैं सबका स्क्रीनशॉट ले लूं, सभी की फोटो जाएगी। फिर सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन करें, मैं फोटो लेके डालता हूँ अभी। हाँ ये बात, हाँ सभी लोग ऑन करें, मैं भी ये पोर्टल पे डालूंगा। ये हाँ ये बात कर लेता हूँ। ऐसे होता है। देखो बच्चे देख कितने होशियार हैं। ये जयप्रकाश जी हैं, अंशदीप, आर्या, रतन गौतम, आप लोग ऑन करिए, नहीं तो आपकी फोटो रह जाएगी, सभी लोग आ जाएंगे, आप नहीं रह पाएंगे। फटाफट ऑन करिए। हाँ ये कंचन सिंह, हाँ ऑन कर दिया आपने, वेरी गुड। और ऑन करिए जयप्रकाश, जयप्रकाश, जयप्रकाश सर, जयप्रकाश सर, हाँ वीडियो ऑन करिए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ आगे और आगे देखिए। जयप्रकाश सर अभी आपने किए, कमलेश जी हैं, अंशदीप, अभिजीत यादव, संजय सिंह बौद्ध, आप लोग अभी ऑन नहीं किए हुए हैं, वीडियो ऑन करिए। हम ऐसी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपका नाम ऐसे जाएगा, फिर आप जानिएगा। ओपी परिहार सर, मैं ऐसे ले लूंगा, फिर मुझे कोई मतलब नहीं है, आप लोग जानिए। संबल से सर, सबकी फोटो ले डालता हूँ अभी, ये पोर्टल पर डालूंगा सारे सभी की फोटो। जिसकी इसकी नहीं आएगी वो अपना चेक कर लेना, इसने वीडियो ऑन नहीं की। इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, कितना खुश लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। क्यों बच्चों,
आपको राजेश कामले सर जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है? यस सर। यस एक बार सर एक आवाज में बोलो। मैं देख रहा हूँ किसको तो समझ में आता है। आपको आता है सार्थक? यस सर। आता है आपको ज्योति समन, ज्योतिराज? आपको आता है? यस सर। अच्छा, प्रहील आधव आपको आता है बेटा? दानिश, दानिश, दानिश यस सर। आपको समझ में आता है? यस सर। देखो सही से पढ़ना, क्योंकि इसका टेस्ट होगा गूगल पर अगले महीने में। ये जो आप पढ़ाया जा रहा है ना, ये गूगल लिंक बनाकर इस पे टेस्ट लूंगा, और टेस्ट लूंगा उसमें नंबर आपको तुरंत मालूम हो जाएगा कि आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। जो अभी तक राजेश कामले सर ने पढ़ाया है उसके सारे टेस्ट होंगे, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा, दिमाग लगा के पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। जैसे बाबा साहब पढ़ते थे, एक बार पढ़ने के बाद इतना माइंड में घुस जाता था उनके कि उसकी पूरी पूरी कहानियां ले लेते थे। तो वैसे ही सभी लोग एकदम मन लगा के पढ़िएगा। एक गूगल लिंक तैयार कर रहे हैं, उसमें सर ने जो पढ़ाया है उसके 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाएंगे क्लास में ही। वो लिंक पहुंचेगा और जैसे ही आप उसके ऑप्शनल रहेगा, और जैसे ही आप उसको क्लिक करके करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता लगेगा कि कितने नंबर आपको मिले हैं। और वो स्क्रीन शॉट यहाँ मेरे पास आ जाएगा, वो मेरे पास सूची जाएगी किस बच्चे ने कितने नंबर पाए हैं। ये क्योंकि मेरा भी टेस्ट होता है, मेरा भी संघ में टेस्ट होता रहता है, संघ में मुझे टेस्ट लिया जाता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा और समझ समझ के पढ़िएगा। जो चीज नहीं आती है वो लास्ट टाइम में राजेश कामले सर से पूछ लें कि ये मुझे सर नहीं आया है, ये समझ में नहीं आया है, तो सर दोबारा क्लास करके पढ़ा देंगे। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारी चीज लिख रहे हैं, लिख के फिर उसके बाद आपके लिए सामने स्क्रीन करते हैं, स्क्रीन पे लाते हैं। मतलब पूरे हफ्ते वो स्क्रीन को लाने के लिए आपके लिए मटेरियल को रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, फिर आपको एक एक पॉइंट बताते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो हमें सही से पढ़ना चाहिए और सही से याद करना चाहिए। राइट? यस राइट? सर। सर। तो टेस्ट के लिए अगले महीने रेडी हैं सब? यस सर। जो भागेगा उसके घर पर टेस्ट लेने आएंगे। सर जो टेस्ट होगा क्लास से भाग जाएगा, भेजी जाएगी। जो घर से भाग जाए, जो क्लास से भागेगा उसका घर पर टेस्ट लिया जाएगा। तो मेरे पास सारे बच्चों के नाम है, सारी लिस्ट मेरे पास है, और सारे घर के नंबर, फोन नंबर है। फट से भेजेंगे वहां पे कि बताओ। सर जो ठीक पेपर है? वाले टेस्ट होंगे उनकी लिंक ग्रुप पे भेजी जाएगी समर्थन के। जी सर जो टेस्ट होगा उसकी लिंक समर्थन ग्रुप पे आएगी, भेजी जाएगी। ग्रुप पे डाली जाएगी बेटा, ग्रुप पे डाली जाएगी, लिस्ट डाली जाएगी। ओके सर। पहले आप पूरा पढ़ लीजिए, नाउन प्रोनाउन जो चीजें पढ़ाई जा रही है पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर एक सेशन राजेश कामले सर चलाएंगे कि किस बच्चे को समझ में नहीं आया है, तो बच्चे बताएंगे कि हाँ मेरे समझ नहीं आया है, वो रिपीट करा देंगे। रिपीट कराने के बाद फिर आपका टेस्ट होगा। अच्छा कितना मजा आता है जब टेस्ट होता है, आता है? किसको आता है मजा? यस सर। हाँ ये बात भी तो देखो, ऐसे बच्चे होने चाहिए, हमारे समण बच्चे हैं ना, इसलिए देखो बड़े बच्चे भी हाथ उठा रहे हैं कि हाँ हमको भी मजा आता है। हेमराज सिमर सब जगह हाँ उठा रहे हैं कि हाँ मेरा मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ने में। राजस्थान में सब पढ़ाते हैं, मुझे भी अंग्रेजी आने लगी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी पहले, मुझे आने लगी। मैं भी पढ़ता हूँ कॉपी पेन लेके।
बहन जी रेडी हो गई हाँ रेडी है वो तो। जी? कीर्ति बहन जी। कीर्ति बहन जी हाँ जी देख लूँ मैं। रेडी है बहन आपको जी? सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ जी बहन जी आ रेडी रही है हूँ। आवाज। बिल्कुल है बहन जी। हाँ हाँ थैंक यू। स्टार्ट करिए आप। अच्छा अच्छा गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून गुड क्या बोलो? आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून है ना? हाँ ओके सो हम लोग आज आज मैं ना मैथ्स पर थोड़ा सा में मैथ्स अभी का ना। कहाँ हुई है यार, हम तो ढूंढ ढांढते रहे कोई अब तक। अच्छा कोई और म्यूट कर दे। हाँ अच्छा ठीक है। सो मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ इधर राजेश जी? एक मिनट सर, वो इनको को होस्ट बना दे। कौन है अभी? हाँ सत्येंद्र सर। आप करें बहन जी। हाँ ये मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती थी, मुझे डिसेबल्ड बता रहा है, तो स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ, अगर नहीं कर सकती हूँ तो ओरली बहन जी बहन जी आप किस नाम से जुड़ी? कीर्ति कीर्ति नाम जुड़ी हुई ना? कर दिया मैंने आपको पोस्ट कर दिया पर पोस्ट हो कर सकते हैं शेयर। शायद आप दूसरे नाम से भी होंगी ना? कीर्ति सिंह से। हाँ ठीक है, आप को होस्ट है, को होस्ट शेयर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा आप मुझे वो परमिशन दे दीजिए, मीनवाइल मैं बच्चों से बात करती हूँ। अच्छा बच्चों मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप किस किस क्लास में हो? सब लोग बताओ एक एक अपना अपना क्लास। मैम 7th। 7th ओके गुड। मैम अच्छा 8th। मैम 4th। ओके मैम पल्लवी 8th। 8 ओके मैम 7th। मैम अच्छा 7th। मैम ओके गॉट इट गॉट इट गॉट इट ओके मुझे पता चल। अच्छा अच्छा 5th से लेके हम लोग 5th से लेके 10th तक है ना यहाँ पे? यस ओके मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सबसे। हाँ मैम आई एम इन 4th क्लास। you are in 4th class okay good job okay I want to ask all of you a question. Okay how many of you know Bodmas rule? I will in 1st class. Ma'am I Okay first class also good job. bracket of division, multiplication, addition, subtraction. Okay Bodmas है division, multiplication, addition and subtraction. yes Addition, subtraction, division, multiplication. Ma'am, bracket open, multiplication, divide and subtract and add. no okay let me Bracket of division, multiplication, addition, subtraction. okay okay got it okay now I want to ask you Bodmas is B for bracket correct? Yes ma'am. O for Off. off पे क्या करते हैं हम लोग? What should we do in off? Multiply yes correct and D for Division. division Division. then M for multiplication yes then A for addition. and then subtraction. S for subtraction. अच्छा For subtraction. now सब लोग हम लोग ना ग्रुप में नहीं बोलेंगे, हैंड रेज करेंगे ठीक है? ऑल ऑफ us will raise our hands okay आंसर पता है तो ठीक है ओके सो BODMAS हम लोग कब यूज करते हैं? when do we use BODMAS rule? I mean simplify. To simplify yes everything we do in maths is to simplify right but when do we use BODMAS? कोई बताना चाहता है? Ma'am, what? Okay. When do we use BODMAS rule? When it is applicable? When to use BODMAS rule? अच्छा मैं बताऊं? Ma'am, wait. Okay.
Somebody is thinking क्या कौन? Simplify. Ma'am, integer. Simplify. Yes. And when we want to do a particular option before Ma'am, other, we integer. put in within bracket. Okay. So when we are having multiple operations in a single equation, right? जब multiple operations होते हैं, जैसे multiplication भी है उसमें, division भी है, subtraction भी है, bracket भी दिया है. Sometimes they give you bar also, right? If you remember, Yes, they give you ma'am. bar also. Yes, ma'am. Correct? हाँ. When multiple operations are there, हमें नहीं पता चलता है कि कौन सा वाला पहले करें. उस equation में multiplication भी है, division भी है. Bracket also. And with the help of BODMAS. Addition भी है, subtraction भी है. हम एक लाइन, yes, use the BODMAS rule. BODMAS helps us to solve the equation with multiple operations. Is that okay? Yes, ma'am. Ma'am, Okay. BODMAS tell us that what we have to do first, what to solve. Yes, which operation we have to solve first. That is what BODMAS says. Yes, ma'am. Correct? Okay, thank you. So, next question. मैं स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं ओरली पूछूंगी आप लोगों को सारे क्वेश्चंस. ओके, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है आज, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर द स्क्रीन, बट इट इज नॉट हैपनिंग. ओके, लेट्स कंटिन्यू विद दिस. ओके, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ. ऑल ऑफ यू, दिस क्वेश्चन इज फॉर फ्रॉम 4th grade to 10th grade. ओके, Yes, ma'am. के लिए है ये. ठीक है, हम लोग फ्रैक्शंस यूज करते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, we know fraction, right? Fractions are the part of the whole. Am I correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. Yes. They are not complete one whole. Like हम लोगों ने पिज्जा खाया है ना, एक पिज्जा पूरा मिलता है क्या हम लोगों को हर बार? No. कभी कभार हमारा बर्थडे हो तो मिल जाता है. बर्थडे हो तो हमें पूरा पिज्जा खाने को मिल जाता है. Ma'am, अदरवाइज in commonly only one slice or two slice. है ना, हमें 1 स्लाइस मिलता है या 2 स्लाइस मिलते हैं. 2 हाँ, 1 स्लाइस या 2 स्लाइस या मैक्सिमम 3-4 स्लाइस मिलते हैं. लेकिन हमेशा पूरा पिज्जा खाने को नहीं मिलता है ना. शेयर करके, शेयरिंग इज केयरिंग बोलते हैं ना. Yes, ma'am. Always. हाँ, that is what we have to keep sharing the pizza, right? So one whole pizza is 1, okay, but we are taking only part of it. We are getting only part of it to eat, right? So वो part जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग fraction, right? It is not complete one whole. One whole से क्या होता है वो? The upper one is known as numerator and the down one is known as denominator. Yes. The upper portion is called as numerator. The Down below word is portion known as हाँ, okay, right. So मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब अच्छा पहले ये पूछना चाहती हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. What is proper fraction? Proper fraction When the is numerator is smaller than the denominator. the numerator is smaller Numerator is less than and denominator. denominator is bigger. हाँ, proper fraction. numerator. हाँ, numerator is And smaller the than the numerator is smaller than the denominator. denominator. Correct. Okay. So numerator is smaller than the denominator. It is called as proper fraction. There is something else other than proper fraction. What is that? Improper fraction. Yes. What is improper fraction? Numerator is improper fraction is Numerator is greater than numerator. numerator is greater than denominator. Okay. Thank you. So सब लोग बोल रहे हैं इकट्ठे. मुझे कुछ आवाज सुनाई देती है, कुछ नहीं सुनाई देती है. It's okay. Ma'am, for example, 20/10. Very good. That's good job. Yes. 20/10. When we write 20/10, the numerator is bigger than the denominator. So we call it as improper. Proper fraction. Okay. हम improper fraction को हम लोग क्या convert कर सकते हैं? Mixed fraction. Fraction. In the mixed fraction. Yes.
कोई एक मुझे बताएगा मिक्स फ्रैक्शन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन? Ma'am, in mixed fraction, the answer come in the whole. हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? एक होल भी होता है and then there is a fraction part also. There is a Yes, one sir. whole part and then there is a Fraction part also. fraction part. Yes. Thank you. You all know the things, okay? Good job. I'm enjoying this class. Yes. Okay. Next. अब मुझे ना different है. Okay. One is 1/7 plus 2/6. Okay. इन दोनों को ऐड करना है मुझे. तो हम क्या First of all, करेंगे? we have to First of all, we take will the take the LCM. LCM of the Ma'am, first of all, हाँ. and then then we'll take the LCM and we will add this answer is sum. 20/42. Oh, somebody told me the answer as well. Good job, kids. Okay. हाँ. Excuse me, मैं ma'am, सिर्फ you मेथड asked. जानना चाहती थी. मेथड जानना चाहती थी मैं कि कैसे करते हैं. Yes. First, we will take the Ma'am, LCM first of the we will denominator. Take the LCM of add denominator. Then we have to divide the LCM with the denominator, and then we have to multiply with numerator. Yes, teacher. LCM लेने के बाद क्या करते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर भी ऐड करते हैं एंड ऊपर से न्यूमरेटर भी ऐड करते हैं. मैम डिनोमिनेटर तो सेम ही आता है, हम सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करते हैं. Ah, that was good answer. Yes, we make denominator same first and we keep denominator as it is and we only add Yes, ma'am. numerators. Ma'am, we have to write only numerator. Yes, correct. Only numerator we add. तो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को. सब लोग अपनी बुक लेके बैठे होंगे, करेक्ट? Yes, ma'am. So please take down one fraction, addition करके मुझे बता देना आंसर. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, we are ready. Fraction. Sorry. Yes, ma'am. 3/7 plus. Yes, ma'am. 1/5. Okay, ma'am. 35. Okay. Quickly करो. Ma'am, 16/35. 7/35. 17/35. 17/35. I got one. Ma'am, 16/35. 7/35. Ma'am, 10/75. 17/35. Ma'am, 17/35 is the right 17/35. Ma'am, 23/35. बहुत सारे different आंसर आ रहे हैं. but the right one is 17/35. And 22. Oh, 17/35. 22/35. And 22/35. Who said that 22/35? Ma'am, 22/35. Okay. Answer is 22/35. 22 is the Ma'am, numerator. 15 plus 7. हाँ. The first fraction क्या हो जाएगा? LCM लेंगे हम लोग. 35 will be the LCM, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 35 is the LCM and the numerator what we are going to do is 15 plus 7 we are doing. That will become 22 by Yes, ma'am. 35. That is the answer. Okay. शेयर नहीं कर पा रही हूँ. अगर शेयर करती तो मैं बना के करके दिखा देती आप लोगों को. Ma'am, in this sharing scheme, we will also do. You can do it. हाँ. सर राजेश जी, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ. कुछ कर हो सकता है क्या? मैं तो पहले बता रहा हूँ, मुझे पता पड़ा. गलत सवाल.
अरे कीर्ति बहन कीर्ति जी जी को को ये पोस्ट बनाइए। बनाना, कीर्ति मैडम को ये करा देना, होस्ट बना देना। ये को होस्ट बने हुए हैं शायद, इनकी हाँ कोस्ट है बहन जी, कोस्ट है। पोस्ट है हाँ बहन तो जी कर सकती हैं आप। अभी स्टिल मुझे ना वो आ रहा है कि पोस्ट डिसेबल्ड अटेंडी स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है। मैंने 2 जगह से लॉगिन किया है, दोनों ले अभी आपको मुझे होस्ट बनाना दूसरे पड़ेगा। पे को होस्ट बनवा देगा। हाँ अच्छा, एक चीज और पूछना था मुझे, दूसरे पे कितना को टाइम है मेरे पास? नहीं, अभी 2 से जुड़े हैं तो दूसरी पे तो बना देना। अच्छा टाइम बता दीजिए कितना और टाइम ले सकती हूँ मैं, उसी के हिसाब से वाइंड अप करती हूँ। पढ़ने वाला और से बोल टाइम तो मर्जी है, टाइम हो गया है वैसे। हो गया है क्या? पढ़ना। अच्छा अच्छा टाइम हो गया है तो मैं वाइंड अप कर देती हूँ, फिर रहने दीजिए, आई जस्ट वाइंड अप करती हूँ। लेकिन आप 5-1 मिनट लेने दीजिए सर, अगर बच्चे थोड़े से ये हो रहे हैं तो 5-1 मिनट रहने दीजिए। बच्चों की हाँ मर्जी। रहने दीजिए। हाँ कीर्ति गो अहेड। अच्छा ओके हाँ कीर्ति बहन जी go ahead. थैंक यू। ओके थैंक यू किड्स, थैंक यू सो मच। या तो हम लोग फ्रैक्शंस एडिशन पर समझ में आ गया ना? अब क्विकली हम लोग सब्ट्रैक्शन समझते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? इज इट सेम सिमिलर टू एडिशन? Yes, ma'am, we have to do the subtraction. only we have to subtract. The method is same, But but we have to do only the subtraction. Yes, what we have to do is it is same Subtraction. like addition. पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर LCM. सेम करना We have पड़ेगा। to take the By LCM. taking by taking LCM we have to make the denominator same and then keep the denominator as it is, subtract the only numerators. We are going to operate only on the numerators, right? So that will be subtraction. And because the numerator are coming this different. Yes, correct. So now multiplication बताओ, quickly multiplication कैसे करते हैं? इसमें भी LCM लेंगे क्या हम लोग? No, ma'am. no. No, ma'am. क्या करते हैं फिर? क्या करते हैं? What should we do? We have to multiply it. We have to multiply with Numerator with the denominator of the other number or the same. अच्छा, quickly एक multiplication करके दिखाओ. Yes, ma'am. 1/8 into 3/4. Multiply quickly. बताओ answer. Ma'am, but we have to in the question. 3 upon 32. 3 upon 32. Question चाहिए? Question बताओ, repeat करो. 1 upon 8 into 3 upon 4. 3/4. Answer Yes. is 3 upon 32. Answer is 3 upon 32. Yes, it is 3/32 because we Ma'am, multiply because numerators. the yes one is not cross multiply. Because 3 is not divisible by 8. Yes. It will be not cut. Yes. So we multiply numerators and we multiply the denominators as well here. Correct? Okay, Yes. no LCM here. It is easy. Multiplication is very easy in fractions. Right? अब Yes, बताओ ma'am. कि आप डिवीजन कैसे करते हैं? You all are Ma'am, smart. we have to multiply and reciprocal it. He will first Ma'am, we have to first of all reciprocal it, then we have to multiply it. Ma'am, first of all we Now have to reciprocal it, then multiply it. take it out. 2/3 divided by 1/7. Ma'am, 14 upon 3. Ma'am, Yeah, answer is Ma'am, 14 upon 3. Okay. Ma'am, 14/3. Yes. It is 14/3. What we do here is 3/2 we keep it as it is and division को हम लोग multiplication में convert करते हैं and the second fraction we reverse it. We Okay. will reciprocal. Upside down लिखते हैं हम लोग.
1/7 Ma'am, है your तो voice is not clear. Ma'am, your voice is not clear. voice is not clear. Yes, ma'am. Okay. Can you hear me now? ठीक है? Yes, ma'am. अभी ठीक है? क्लियर है वॉइस, तो वॉइस इज क्लियर। Sorry, बताइए। Yes, ma'am. Now it's clear. Okay. So what we are doing here is हम लोग 3/2 first fraction as it is लिखते हैं, and then the division we convert into multiplication, and then the second fraction we set. Okay. और take yes reciprocal of it. Okay, upside down लिखते हैं, and then we do the multiplication. Multiplication. Yes, and you never leave the fraction answer in the proper fraction form. Mixed fraction करके convert करके answer छोड़ना है आपको. Okay. What, ma'am? And you have to write the answer. Never leave your answer in the improper fraction form. Okay, the final answer जो होता है आपका. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Okay, this is what I wanted to take up today. आप लोगों ने अच्छे से cooperate किया बच्चे लोग. Thank you so ma'am. So much. Thank you, Next ma'am. time मैं prepared होके आऊंगी. आपको कोई टॉपिक चाहिए, किसी टॉपिक में बताना है, क्लास लेना है, तो बता दीजिए मुझे पहले. ठीक है? Okay, ma'am. Okay then. Thank you so Ma'am? much. हाँ जी. Thank you. Ma'am, can you please give your phone number? हाँ, मैं आपको फोन नंबर दे सकती हूँ. मेरा नंबर है 888 4580 799. मेरा नाम कीर्ति है. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Rajesh. Repeat again. Ma'am, please repeat again. Parihar sir. Thank you. Please take over. Ma'am, repeat again. Ma'am, can you repeat the number? अच्छा, it is 888 4580 799. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, 4580 458 4580 799. जल्दी जल्दी लिखना चाहिए ऐसे. मैथ्स कैसे करेंगे आप लोग? Ma'am, done. Ma'am, written. Ma'am, written. हाँ हाँ, करेक्ट. ठीक है. Good job. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you. Bye bye. Bye, ma'am. Thank you. कंप्लीट हो गई बहन जी? हाँ जी, हो गया. Thank you so much. मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया. नहीं बहन जी, कोई दिक्कत नहीं. बच्चे हैं, स्केल के पढ़ लेते हैं, कोई समस्या नहीं. मजा आया आप लोगों को पढ़ने में? Yes, Yes. कितना Yes, मजा sir. आया? Yes, sir. अच्छा, तो आप थक गए हैं, खाना खाना है? Yes, sir. अच्छा, फिर क्या किया जाए? Leave meeting. हैं? Leave meeting. टीम मीटिंग की जाए तो पहले मालूम क्या कहना है, ये पता है आपको? हमारा संग समण-समण। कौन बोलेगा पहले? नहीं, बच्चे ही बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम तो पीछे से बोलेंगे. अच्छा ठीक है सर, थैंक यू. हाँ, यही बोला कोई. देखो ये, आप बोलो, तेईस बोलो. हमारा संग. समण संग, हमारा संग. समण संग. संग. संघों का संग. आ गए. हाँ, जेपी सिंह अम्बेडकर सर आ गए. जेपी सिंह अम्बेडकर सर लगवाइए. हाँ भाई, हेलो. संगम नमामि सभी साथियों को. संगम नमामि सर. नमामि सर. माइक अनम्यूट करें, सभी अपना माइक अनम्यूट करें. माइक अनम्यूट. संगम नमामि सर. संगम नमामि, संगम नमामि. माइक अनम्यूट. सर. वीडियो अनम्यूट. माइक अनम्यूट. फास्ट वीडियो बना रहे हैं, जल्दी करो. हाँ सर. वीडियो बना रहे हैं आतंक सर, क्या आदेश है? सर. हमारा संग समर्थन ना लगवाइए कसके. ओके ओके, ठीक है.
सारे बच्चे अनम्यूट करें, सारे बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, बूढ़े बच्चे, सब बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर ले। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। सब लोग अनम्यूट हो जाए। माइक अनम्यूट, वीडियो अनम्यूट। सारे लोग वीडियो में आ जाइए, सब लोग वीडियो में आ जाओ। कम ऑन बच्चे, बड़ी आ जाओ। हाँ, ये फोटो डालेंगे, वीडियो डालेंगे, वीडियो बना रहे हैं। हाँ, एक साथ बोलेंगे सब साथी। सब छोटा संगी आ गया, छोटा संगी आ गया, छोटा संगी आ गया। छोटे संगी, बड़े संगी, समण बहने, समण भाई, सब एक साथ बोलेंगे। सत्येंद्र सर, आपके फेस क्या लाइट आ रही है? सर वीडियो और मोबाइल के ऊपर किसका क्या कह रहे हैं? आपके फेस क्या लाइट पड़ रही है? अच्छा, लाइट पड़ रही है। हाँ, लाइट हटा रहे हैं, हटा रहे हैं। हटाओ इसे। लाइट हटा रहे हैं। इधर का क्या बोल, ठीक है, चलना। ठीक सर, हो गई। हाँ, सही है। चलो एक साथ, अब ठीक है। सब प्यारे बच्चे और सभी समण भाई बहनें एक साथ बोलेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा हमारा जीतेंगे। आपसे कहो हम समण हैं। हम समण हैं। ना खाता ना बही, जो संग कहे वही सही। खाता ना बही, जो संग कहे वही सही। तुम्हारे संग की क्या पहचान? ऊंचा ऊंची तुम्हारे संग की क्या पहचान? संगक नमामि, संगक नमामि, संगक नमामि। फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं। और सुनो, अपनी अपनी मम्मी से कहना, अपनी मम्मी से कहना कि 2 बजे उन लोगों क्लास है। ये लोग अपनी मम्मी को बोलना कि 2 बजे उनकी क्लास चलेगी। हाँ, 2 बजे आटा गूंदने की, रोटी बनाने की, और मालूम पंचायत करने की। ठीक है, ओके।